I'm gonna create few of the components. First one is a.jsx, and inside component a.jsx, what I'm just going to do, I'm just passing something like this. I don't know what happened. Why is not that extension working now? So I will have to manually export it. Export default, and the function is this. So from this function, I want to return a div, and within that div, I have written here component a component, and yes, let me copy this one, and let me create one more component that the name of that component is b.jsx. Let me paste it here, save as well, and let me make it b component. Sorry, b component. Yep, and I will just copy this one last time, and I'll create two more components, c.jsx, and one more, that is b.jsx. And inside d.jsx, I'm gonna write d component, and within C, I'm gonna write C component. Let me save it, and now let me come inside app.jsx. So within app.jsx, I'm gonna remove it completely, and I'm gonna type something like this. I don't know why this extension is not working. Let me check ES7. Yeah, it is working, I guess. थोड़ा सा CPU यूसेज ज़्यादा हो रही है शायद. Anyway, let me export default, create one function, and through this function I want to return one div, and let me write app component. Let me just save it, return, and run this application now. Cd client npm rundown. Let's see what happens. Mm, so our application is just starting. Okay. So here we are, app component. Okay. And see, this is one of the ways to export default function at definition time. यहाँ पे क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर ही रहे हो डिफॉल्ट, तो इस फंक्शन का नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, एंड मैंने फंक्शन का नाम नहीं रखा, बस इसको यहाँ से डिफॉल्ट कर दिया एक्सपोर्ट. एंड विद इन दिस component, I'm just gonna import the component A from components directory, and the name of the component is A. And within app component, I'm gonna do something like this: div, div app component, and just after app component, I'm gonna type something like this: div, not div. I'm gonna render here a component as well. Then what will happen? सबसे पहले ऊपर app component दिखेगा हमें, और app component के नीचे a component that is coming from component A. And within component A, what I'm just going to do, I'm gonna import component B here, and B from where? So B is a component in the current directory, and the name of that component is B. So I will come in app.jsx, and I will copy this div and paste it here in this place in A component. I'll just paste it here, and here I will write, first of all, this is A component, and because I have imported in this component a component that is B, I will type something like this. Now let me create the virtual DOM out of it. So what just happened? सबसे पहले हमारे पास एक div है जिसमें B लिखा है, then यहाँ से A आया, A से ऐप कंपोनेंट में गया, और ये ऐप कंपोनेंट कहाँ आएगा? हमारे index.html में div id root में. So let me check. First of all, app component should be there, and then A component, and after B component. Okay, and then in B component, what I will do, I will come here, I will write import C from it, and then I will come in C, and I will import D here. Okay, I'll have to manually do it. So D, okay, I have imported these components here, and B component, I will cut it from here,
and I will make another div here, be paste it here, and below it I will render C component here and paste it here. And C में आके मैं सेम कार्य करूँगा, इसको कट किया एंड यहाँ पर एक div लिया, पेस्ट किया एंड इसके जस्ट बाद में डी component को रेंडर कर दिया. So yeah, it is coming like this. Where is that? Like I guess I have removed it. Anyway, let me write localhost port number 55179 है ना, 79. बहुत बढ़िया. So here we are getting something like this, and anyways I will go in my app.jsx and here at this place यार कोई एक्सटेंशन काम क्यों नहीं कर रही क्लास नेम. मैं इसको बोलूँगा भैया मार्जिन ले लें हर डायरेक्शन से 40 पिक्सल का, बीजी ऑरेंज ले ले बस, तो 300 पिक्सल के आसपास. लेट मी सी. ओके, परफेक्ट. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव component A, sorry, app component, and within app component I have imported A and rendered it there, and within A component I had imported B and I had rendered B there, C here, and then B here. Let me let me draw the diagram of it and show you, try to explain it with the help of that diagram. And ठीक है, login with Razor. Okay, just look at this place. First of all, we will be having app component, and let me zoom it a little bit. An app, within app component, what we have done within this app component, we have imported something. App component, within this app component, within this app component we have imported a component, right? So let me create here, this one is this one is a component, and I had imported it here within app component. And if I'll go to like component A, then you can see within A component I have imported component B. So I will make a copy of it as well, and I have imported B component within A component. Let me make it B and copy it, B component. If I go into B component, if I go in B component, go in B component where it is, yes. So within B component I have imported component C. तो B के भी अंदर हमने import कर रखा है the component C. Where sir, nowhere but inside the B. B के अंदर हमने C को import कर रखा है, and if I go to C now, C में I have imported the D. So I will create one more component, and the name of this component is D. I have connected it with it. Okay, now let's see how my application is. So my application is like this. App is connected to A, and then B. App is connected to A को हमने रेंडर करा इसमें, B को A में, और B में C को, यानी कि C को B में, and then D. So this is how my application is. See, suppose I want to share one data from here to here at this place. Can I send data from here to there? For example, in app component, inside component app, we are having a variable. So variable I can create here only. This is const name, and this one is Hasib. So what I want you to do, sir, I want this data to share from here to to component D here, and I want to render it here. Can I do it? क्या मैं ये कार्य कर सकता हूँ? See, because there is no direct connection between A and D. That is why I cannot do it directly. Then what do I need to do? First of all, I will share this data from here to here, and then from here to here, and then from here to here, and then from here to here. With the help of what? With the help of props.
From this, I will pass a prop here. For example, I will come here in app component. I will come here and I will pass one prop. When I'm rendering a here, I will pass one component that is name. Name is equal to this one name, and I will come in component A and just destructure this name out of it. And let me show you. Let me log on the console name from name from a कॉम देखो ए कॉम्पोनेंट है यहाँ पे देखो उधर मत देखना ए कॉम्पोनेंट से नेम देखो क्या आ रहा है सो वेयर इज माय एप्लीकेशन सो या हियर इट इज इफ आई गो एंड इंस्पेक्ट माय वेब पेज सो आई विल have to open the console of it so hasif from a component आ रहा है सर इज इट रियली दैट हासिफ जो हमने यहाँ पे लिखा है तो मैंने कहा हासिफ की जगह हासिफ सर लिख देते हैं लेट मी सेव एंड चेक सो हासिफ सर फ्रॉम ए कंपोनेंट आ रहा है then what will I do actually I will not print this hasif from a component here but I will pass this line in component b and I will write something like hasif from b component here we have an error sir name is not defined within this component okay then I will go in a inside a I had rendered b then I will pass name throughout a to b now it will show me sorry hasif क्यों नहीं आया because I will have to destructure it here as well I will pass सॉरी ये तो ऐप में काम कर रहा हूँ यार मैं इसको कट करके ना यहाँ से बी में आ जाना है बस सेव किया एंड व्हाट वी आर गेटिंग हासिफ फ्रॉम बी कंपोनेंट सो ऑन मुझे करना पड़ेगा अच्छा एक बात बताओ ड्रिलिंग मशीन देखिए आपने ड्रिलिंग मशीन वो क्या करती है दीवार है पहले ऊपर वाली लेयर को क्लीन करेगी फिर इसके नीचे एक और लेयर होगी उसको क्लीन करेगी ऐसे ऐसे करके जल्दी से वो ऐसे सुरंग बनाती है राइट क्लियर है सो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे प्रॉप्स यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग although by using this concept we can share some data from here to here indirectly passing via them लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आप बैठे हो आपको एग्जाम दिखाना है सिर्फ इस व्यक्ति को लेकिन अब आपको इन 3 व्यक्ति को भी एग्जाम दिखाना पड़ रहा है ठीक है तो सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आप क्या करोगे आप शीट बना के फेंकोगे ये बोलेगा तो मुझे नहीं दिखा गया ये मैम से पकड़वा देगा तो हमने कहा यार ये भी नहीं कर सकते तो मैंने इसके साथ एक एग्रीमेंट बनाया मैंने डी कॉम्पोनेंट से बोला भैया एक काम करते हैं मैं जाऊंगा देख जब मैं काम कर लूंगा क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन लिखूंगा और मैं जाऊंगा वॉशरूम और वहां दीवार के ऊपर रख जाऊंगा ठीक है इसको मैं जगह बता दूंगा इसने भी कहा ठीक है अब ये मेरे बात जाएगा तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम कॉन्टेक्स्ट इज लाइक वो प्लेस जहां पे मैं क्वेश्चन पेपर छुपा कर आऊंगा सो हाउ डू वी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट लेट मी कम टू हियर अच्छा सबसे पहले ये बताओ प्रॉप्स ड्रिलिंग क्लियर है प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है प्रॉप्स ड्रिलिंग सर necessary from a grandparent component to grandchild component if we want to pass the data then we will have to pass through all the parents within that right इससे क्या होगा सर परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो होगी दूसरा डेटा में रिडंडेंसी आ सकती है कैसे इमेजिन आपके ऐप ने ए को दिए यहाँ पे 100 रुपए नेम में अब इसने भले ही यहाँ पे नेम को डिस्ट्रक्चर किया लेकिन नेम में यहाँ पे हासिफ की जगह अपना नाम लिख दिया आशुतोष है ना रिडंडेंसी आ सकती है ना अब जरूरी थोड़ी है इंटेंशनली करे अनइंटेंशनली भी इससे कोई गलती हो सकती है सो वी वांट टू इम्प्रूव दिस कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन component app to component D. How we are going to do that? So first of all, let me remove this name wherever I have kept it. Okay, let me store this one and app में तो नहीं है A में भी A में है yeah I will have to remove this one yes so now I want to pass some data from I want to pass some data from app component to D component so I will come in app and I'll say okay, import one more hook from make sure when you are importing something आपको सजेशन नहीं देगा जब तक यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम नहीं लिख देते लाइब्रेरी का नाम लिखो सो वी वांट टू import one method one hook from React out of React that will help me to create a context what can be the name of that hook simple create context
create context, perfect. So with the help of this create context, what we are going to do, we are going to create one context, and what is the thing this context is sharing, that is name, right? क्या क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक तो नहीं यूज कर सकते, कॉन्टेक्स्ट हाँ ये कर सकेंगे। हुक हम वहाँ पे इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि वहाँ पे दिस स्टेट डायरेक्ट आता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। देन वी विल से कि यार हमारा जो कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं क्या नाम रखें इसका नाम, बस ये थ्योरेटिकल लाइफ साइकिल मेथड क्या है, बस माउंट ये वो, बस ज़्यादा कुछ नहीं। सो आई विल नेम माई कॉन्टेक्स्ट एज अ name, context, or anything you want to like let me call it a name only. Then what you need to do, you just need to write here create context. Let me save this one here. Now what will happen, you have created a context and the name of this context is a name. See, this function returns one object. Make sure this function this hook returns one object and the name of that object has been kept to name. Okay, and within that object we are having one component and the name of that component is a provider. So either we could have done something like directly, or anyway I'm just naming it name. And then अब क्या है, जब जो कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया है, जो जगह छुपाने वाली है, वो आपको बताना भी तो पड़ेगी अपने दोस्त को। तो आप क्या करोगे, अपने पूरे एप्लीकेशन को, अपने 3-4 जो भी ग्रुप के मेंबर है सबको आपने बता दिया दैट आई हैव क्रिएटेड अ कॉन्टेक्स्ट and the name of a context name of that context is name. Let me copy this one here and यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, name को provide कर रहा हूँ, देख लो भाई नेम को प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाद में मत बोलना बताया नहीं था। सो नेम को प्रोवाइड किया इतने लोगों के बीच, हमारे बीच की बात है बस ये कि बीच वाले जो लोग हैं ना, ये डायरेक्ट या तो ये या फिर इनके जो नॉन में पर्सन है ये उनको बता देंगे, सिर्फ वो ही लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो आई हैव क्रिएटेड वन कॉन्टेक्स्ट and now if I'll go to my application I will find some error there. What happened, दोबारा बंद हो गया क्या, कहाँ है मेरा इंटरनेट ब्राउजर, ये रहा, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभी इसको ढूंढना। सो आई एम गेटिंग सम एरर। मेक श्योर whenever you have created a context with the help of this create context and इसके पास एक प्रोवाइडर नाम की चीज़ है जो बताएगा सबको कि हमारे पास ये हुक है, इसको ना हमेशा एक एट्रीब्यूट, एक प्रॉप पास करना होता है एंड द नेम ऑफ दैट प्रॉप इज वैल्यू। मेक श्योर मैं देख लो यहाँ पे वार्निंग क्या दे रहा है, हट गई, एक मिनट इसको अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो इसने क्या बोला मेरे को, इसने क्या बोला देखो, वार्निंग वैल्यू प्रॉप इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। जब आप कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना चाहते हो तो कॉन्टेक्स्ट जगह तो बता दी लेकिन वहाँ पे कुछ रखना तो पड़ेगा। ये लो मैंने रख दिया, मैंने बोला कॉन्टेक्स्ट में वैल्यू रखिए ये वाला नेम। लेट मी कॉपी दिस वन, पेस्ट इट हियर। नाउ लेट मी गो टू माय एप्लीकेशन एंड रिफ्रेश दिस वन हियर। अब क्या हो गया, ये फ्रॉम बी कंपोनेंट क्यों आ रहा है, लेट मी गो टू बी एंड अच्छा एक बात बताओ, ये एरर क्यों नहीं दे रहा, नेम की जगह पे एरर क्यों नहीं दे रहा, सिर्फ बी फ्रॉम बी कंपोनेंट आ रहा है, नेम नॉट डिफाइंड एरर क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज नेम ना इट इज एज्यूमिंग नेम एक ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल है जो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर है जिसकी वैल्यू नल है। तो नेम वो समथिंग प्रीडिफाइंड, तभी ये डेप्रिकेटेड सा सिंबल सा बना आ रहा है। कोई नहीं, रिफ्रेश किया एंड ओके नाउ सी योर एग्जाम वाज देयर, आपने क्वेश्चन मार्क में सारे आंसर्स लिख दिए, आपने दोस्तों को बता दिया कहाँ पे वो आंसर मिलेंगे। अब क्या है, आपके दोस्तों को पहुंचना पड़ेगा वहां पर, आपको स्पेक्स कहाँ है, अच्छा विजिबल है या जूम करूं, ठीक है। तो अब आपके दोस्तों को उस कॉन्टेक्स्ट के प्लेस पे पहुंचना पड़ेगा उसको यूज करने के लिए, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने ना कॉन्टेक्स्ट बना के रखा है वॉशरूम में एंड यहाँ पर जिस भी कंपोनेंट में यूज करना है, फॉर एग्जांपल डी में, यू विल कम हियर एंड यू विल से आई वांट टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम React. Okay, I want to import something from out of React. I want to import something out of React. What I want to use, sir, I want to use a hook.
I want to use a hook. And बहुत बढ़िया, perfect. This is a hook. Sir, with that hook, what do I want to accomplish? I want to use the value of context. So the name of hook is simple. Use context. Use कर लो context को. And I have imported it. I had imported it. मेक श्योर प्रोसेस को फॉलो करना. देखो यार ये डिक्लेरेटिव है तो यहाँ पे अब लॉजिक तो है नहीं जो देख के आप समझ जाओ. ये प्रोसेस याद करोगे ना, यही आपको करना है बस. एंड यहाँ पे आप बोलोगे यूज कॉन्टेक्स्ट. यूज कर लो कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है. एंड यहाँ पर एक वेरिएबल बना दो, const नेम इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट. लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, name from the component. When I'll save it and let me go to my web page, then what I am facing some error. Sir, make sure use context hook always. Use context hook always ask you the reference to that context जिसकी वैल्यू आप यहाँ पे निकालना चाहते हो. क्यों सर? क्योंकि सर एक से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने अपने क्वेश्चन पेपर छिपाए होंगे. कौन सा वाला आपको पता लगना चाहिए ना. क्या पता किसी ने फ्रॉड आपको फेल करने के लिए नकली रख दिया, वहां पे कुछ निशानी लगाना पड़ेगी. तो आपने बोला हमारे वाले कॉन्टेक्स्ट का नाम नेम है. अब आपको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कराना पड़ेगा, बट मेक श्योर बाय डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक चीज हो सकती है, लेकिन एक्सपोर्ट तो एक से ज्यादा चीज करा सकते हैं. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपोर्ट कर दो इस वाले नेम को, ठीक है. वंस आई हैव एक्सपोर्टेड इट फ्रॉम हियर, आई विल हैव टू कम हियर. मैं बोलूंगा जो निशान उसने लगाया है ना, जो निशान उसने लगाया उसको इंपोर्ट करना है हमें. कहाँ से? फ्रॉम वन डायरेक्टरी बैक देयर इज app.jsx. okay, from there we want to import something. And what do we want to import? Name. Okay, and you just need to pass name here only. And this use context hook क्या करेगा, इस name में से ढूंढेगा और आपको name की value दे देगा. And let me go to my web page now. So what it is getting here, Hasib sir, how beautiful this was. It is amazing. अब कोई props drilling नहीं है. अब ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड साइलेंट कंपोनेंट तक आराम से डेटा को शेयर कर पा रहे हो. बीच में कहीं प्रॉप्स ड्रिलिंग नहीं हो रही, आपका डेटा सिक्योर है. बीच वाले लोगों को मिला ही नहीं है डेटा. क्लियर है जी? कॉन्टेक्स्ट हुक क्लियर है. बट विद कॉन्टेक्स्ट हुक वी हैव सम प्रॉब्लम. दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, बट इन प्लेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई वी आर नाउ यूजिंग take a Redux toolkit. Let me discuss the problem that we face with using context API. See, context API, if you're using context API, for various context, you will have to create different context. Suppose I have one, let me come in app component. Suppose I have one more context and the name of this context is a const age. Let's name it age. And create context. Although you have created a context, but now you want to you also have a variable. The name of this variable is const age and the value of age is 18. okay, so you are 18 plus now, and you want to pass age as well. How you gonna do? You gonna do something like this? No, you are not allowed to do it, because one prop can bring one value with it only, and you can pass some object. Yeah, with that object you can do that, but we do not suggest you to do something like this. Then what we are required to do, we will take this age, copy it, and we will come here. मैंने कहा name तो provide कर रहा हूँ, name के साथ साथ age भी provide कर रहा हूँ. Let me cut this one here, let me paste it here. And with the name I also want to use age. Then what will I do? I will say कि I want to import age from app, copy it here, and I will say use कर लो context इस age को, and then I will say कि use context age जो भी चीज़ रिटर्न करवा रहा है ना उस की वैल्यू डायरेक्ट इसको यहाँ से कट करो एंड यहाँ पे age में दिखा दो. ठीक है, age एंड करली ब्रैकेट्स यहाँ पे नेम दिखा दो, नेम. ठीक है, तो डायरेक्ट पहले हमने वेरिएबल की वैल्यू को जो इनने रिटर्न कराया था वेरिएबल में रख के प्रिंट कराया था, यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट करा दिया. एंड नाउ यू कमिंग हियर, क्या आ रहा है? हासिफ फ्रॉम डी कंपोनेंट, वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम. ओके, ओके, yeah, we had provided the age but we didn't pass the age. Make sure if I'll write 20 here, it does not matter कि इसका नाम अगर age है
तो ये इस वाली एज को लोगा ना ना ना, इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे ये सिर्फ उस चीज़ को एक्सपोर्ट करेगा. 20 Hasib sir from D component. Sir, although we can do it very easily like this, but वैल्यू में भी है, देखो 20 पास कर दिया. नेम के केस में भी ऐसे ही है, आप यहाँ पे लिख दो अक्षिता, तो अक्षिता आ जाएगा. मैं बस ये बता रहा हूँ, ये मत सोचना नेम नेम कुछ रिलेशन है, एज एज कुछ रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है भैया. रिफ्रेश करो. अक्षिता क्यों नहीं आ रहा, लेट मी जस्ट चेक. आ रहा है 20 अक्षिता फ्रॉम डी कॉम्पोनेंट. ऑल्दो हम मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट एक देखिए क्या ऑब्जेक्ट को पास करेंगे. यस, ऑब्जेक्ट को रख के ऑब्जेक्ट से पास कराएंगे. हाँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते. कितने भी कंटेक्स्ट बना सकते हो, बट ये स्ट्रक्चर ना बहुत बेकार लगता है. इस वजह से इसका सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई, वो हम कल देखेंगे. बट अभी के लिए आज एक कुछ मज़ेदार सी चीज़ सोचते हैं हमें क्या करना है. देखो, हमें करना सिंपल सिर्फ इतना है, एक टू डू लिस्ट बनानी है. दोबारा सुनना मेरी बात, टू डू लिस्ट बनानी है. चलो यार, फिर उधर चलते हैं, इरेजर पे अच्छे से समझा देता हूँ क्या करना है. पूरे दिन का टाइम है आपके पास, तो हमें ना एक बनानी है टू डू लिस्ट. ठीक है, इस टू डू लिस्ट में ना हम दो कंपोनेंट लेके इंपोर्ट कराएंगे. एक कंपोनेंट का नाम होगा टू डू आइटम, इंसर्ट करना. ठीक है, इससे हम टू डू आइटम क्रिएट करवाएंगे, मतलब फॉर्म यहाँ पे होगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा. एंड वी विल बी हैविंग वन मोर थिंग. सो दिस वन इज शो टू डू. शो टू डू. अच्छा, एक चीज़ और, ये मैं इसका लेवल ऊपर रख रहा हूँ, मतलब शो टू डू को पहले रेंडर कराना है, इसको बाद में, कि लिस्ट पहले शो और बाद में ऐड कर पाएँ. ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, असली कहानी तो अब शुरू होती है. देखो, पहली चीज़ तो जो भी आप शो टू डू से शो टू डू में दिखा रहे हो या टू डू आइटम से क्रिएट करवा रहे हो ना, पहली चीज़ ये जो चीज़ें आप करवा रहे हो, एक मिनट रुको. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, दोबारा दोबारा बताता हूँ. एक्चुअली हमारे पास ना दो पेज होंगे, एक टू डू लिस्ट के अंदर दो पेज होंगे. इसका यूआरएल क्या होगा, रिएक्ट आउट डॉम तो कर ही चुके हैं. इसका यूआरएल होगा शो टू डू. ठीक है, यहाँ पे शो टू डू करेगा. इसका यूआरएल होगा क्रिएट टू डू, क्रिएट या फिर जो भी आप रखना चाहो, क्रिएट टू डू. अब वो बात अलग है, हम ऐसे नाम रखते नहीं है रेस्टफुल एपीआई में, रेस्ट एपीआई में, बट रख देंगे क्रिएट टू डू और शो टू डू. शो टू डू पे जाके हम लिस्ट देख लेंगे. यहाँ पे आप एक बटन दे दोगे, इस पर क्लिक करके यूज़र यहाँ आ जाएगा. यहाँ पे एक बटन दे दोगे, इस पर लिस्ट क्लिक करके यूज़र यहाँ पे आ जाएगा. तो टू डू आइटम में आपको क्या करना है, दोबारा बता रहा हूँ. आप आइटम से पूछोगे, जो भी नाम है या ये जो भी चीज़ आप कलेक्ट करना चाहते हो यूज़र से, वो ले लोगे आप. जैसे आप क्रिएट टू, मतलब इसमें सेट टू डू करोगे, क्रिएट करवा दोगे, एरे में पुश करवा दोगे. बट जब आप इस पेज पे आओगे ना कंपोनेंट में चेक करने के लिए, देन क्या होगा, आपका डेटा रिफ्रेश हो चुका होगा, नई एचटीटीपी रिक्वेस्ट में आ रही है. तो आपको डेटा को रोक के रखना है. कैसे, टू डू आइटम से जो डेटा आप रख रहे हो ना, डायरेक्ट फिर से बता रहा हूँ, टू डू आइटम से जो डेटा आप रख रहे हो, टू डू आइटम में जो डेटा ले रहे हो, पहली बात तो इधर एक, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इसमें ना हम एक कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे ऐप में. कॉन्टेक्स्ट का नाम टू डू कॉन्टेक्स्ट रख दो या जो भी रख दो. सो बेसिकली टू डू कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक एरे होगा, जिस एरे को हम यहाँ पे फैच कर रहे होंगे. लेकिन ये एरे ना डेटा ले रहा होगा लोकल स्टोरेज से. लोकल स्टोरेज पे आप अपना डेटा रखोगे ताकि वेब पेज रिफ्रेश होते ही डेटा लूज ना हो जाए. तो कुल मिला के ऐसा कुछ करना है. थोड़े बहुत हिंट दे दी, बाकी make the necessary assumption and solve this problem before tomorrow. And tomorrow we are going to have a very beautiful look on RTK. क्या कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी हो जाएगा. रिडक्स में तो खैर हमारे पास परसिस्टर होता है जिससे हम कर लेंगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमें मैन्युअली करना पड़ेगा. क्या भेज बना रखा है, ये दोबारा करना है बना.
कोई नहीं, टू डू मेरे को फाइनल प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है जो फंड लाइक कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। बढ़िया है। इसमें क्या यूज कर रहे हैं, टूल किट? चलिए